So when we measure GDP, आउटपुट मेथड के हिसाब से जीडीपी आपने कैसे मेजर की थी? You took the price of the good and you multiplied it with the quantity, और उससे आपको पता लग गया एक गुड की कितनी वैल्यू जनरेट हुई है। और उसी तरह से तुम सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस करते हो उन सबको तुम इंक्लूड कर लेते हो, तो you get a large figure. Like in Pakistan you would get 284 billion US dollars worth of goods and services were being produced. हर गुड की प्राइस इनटू क्वांटिटी की थी आपने। अब द थिंग इज, this 284 का फिगर नेक्स्ट ईयर कैन गो अप बिकॉज इफ इन्फ्लेशन कम्स इट तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी, एंड इफ इट आउटपुट इंक्रीसेस तो भी ये नंबर ऊपर जाएगा। तो द थिंग is it going up because of the quantity or is it going up because of the price? तुमने ये figure out करना है, because remember, if it is only going up because of the price, so that's mostly inflationary. People are buying the same goods and services at higher prices. That's not good from living standard point of view. On the other hand, if this figure is going up because quantity is increasing, people are buying more quantity at the same price. Quantity measures people's living standards, not how much money they're paying for it. ठीक है? Because paying could be because of the inflationary reasons. So we'll write that when we're calculating GDP, in order to calculate GDP, if you take into consideration inflation and you take it out, तो economist makes this GDP का distinction between the two things. One is called the nominal GDP and the other is called the real GDP. What do they mean, nominal and real? Nominal, in the basic terms, which you can write for your essay answer, but it won't be enough, it will be just worth 1 mark, कि नॉमिनल जीडीपीज जो होती हैं दे आर नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। दैट मीन्स इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट इज इंक्लूसिव, एंड रियल basically means that it is adjusted for inflation. That means inflation की वजह से जो जीडीपी ऊपर जा रहा था आपने उस इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को ख़त्म कर दिया है। You've taken that out and you are trying to see कि whether people are able to afford more stuff or not. Nominal GDP is mainly monetary, and real basically measures the purchasing power of people. Purchasing power बढ़ना is more important than just monetary figures. So let's suppose, let me give you an example. एक country है and that country is only producing, let's say, steel. assumption के लिए समझा रहा हूँ, वैसे तो एक कंट्री कभी भी एक गुड नहीं बनाता, दे मेक मल्टीपल गुड्स, लेकिन एक कंट्री है जो स्टील बना रही है, एंड लेट्स से इन 2010 the country produced about, let's say, 10 tons of steel and each ton was sold for $100. तो जीडीपी कितनी हुई? क्योंकि since we're saying there is only one good the country is producing, तो I would say price into quantity अगर मैं कर लेता हूँ तो turns out the GDP
is $1,000. In 2011, the same steel prices went up to 110, but the output remained the same. So, what happened to the GDP? It has gone up to 1100. Now, one would say, the politicians would say, that the country has progressed by 10%. Our GDP went from 1000 to 1100. So that's great. We have progressed. But an economist would say, hold your horses, let me look at it from the real way. ये जो हमने निकाली है ये नॉमिनल है. नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे निकलती है. करंट प्राइसेस आर यूज्ड टू कैलकुलेट जीडीपी. जिस साल की जो प्राइस है, 2011 में 110 की प्राइस है, आप इसी प्राइस के साथ चलोगे, इंटू 10 करोगे, 1100 आया, ये भी नॉमिनल है. लेकिन रियल में क्या होता है? रियल में आप बेस ईयर का कांस्टेंट प्राइस लेके चलते हो. तो बेसिकली अगर मुझे रियल जीडीपी निकालनी है तो बेस ईयर चूज करना पड़ेगा. एक बेस ईयर हो गया मेरा 2010. तो इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी ऑन माय बेस ईयर, तो मैं लूँगा बेस ईयर की प्राइस इनटू बेस ईयर में जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई 1000. टर्न्स आउट नॉमिनल और रियल बेस ईयर में एग्जैक्टली सेम होता है. दैट्स ऑलवेज ट्रू. द इंटरेस्टिंग थिंग हैपन्स नेक्स्ट. बेसिकली 2011 में अगर मुझे रियल जीडीपी निकालनी है तो मैं 2011 की क्वांटिटी लूँगा और जो प्राइस है मैं वो बेस ईयर की लूँगा, कांस्टेंट प्राइस. एंड बाय डूइंग दिस मेरा रियल जीडीपी अभी भी 1000 आ रहा है. तो इसमें मैंने क्या है, ऊपर लिखा है रियल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रियल जीडीपी फॉर 2011, जब मैंने इस साल की क्वांटिटी बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो मैंने इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है उसको एलिमिनेट कर दिया बाय टेकिंग द कांस्टेंट प्राइस. सो लेट मी रिपीट माई सेल्फ. Nominal GDP has inflation built into it because you took this year's price. Real GDP takes the base year की price ताकि inflationary impact ख़त्म करो. इसको हम बोलते हैं constant prices are used to calculate real GDP. Constant prices. अब let's suppose scenario number 2. 2011 के अंदर prices were 90 and the goods produced were, the price is 90 but the quantity is 20. तो when I multiply I get GDP as 1800. ये मेरी nominal है. Why? Because 2011 की जो प्राइस थी, करंट प्राइसेस, बेस ईयर तो 2010 है, इस साल की प्राइस करंट प्राइसेस इनटू इस साल की क्वांटिटी 1800. बहुत अच्छी बात है. रियल जीडीपी मैं निकालने जाता हूं तो आई विल टेक दिस ईयर्स क्वांटिटी बट बेस ईयर की प्राइस ये बता रहा है रियल जीडीपी इज 2000. व्हाट इट इज टेलिंग अस इज दैट परचेजिंग पावर पॉइंट ऑफ व्यू से द इकोनॉमी हैज रियली गॉन वेल. GDP has grown from 1000 to 2000, but nominal is saying it went from 1000 to 1800. Understate कर रही है nominal, because nominal has taken the deflation into account. लेकिन हम देख रहे हैं कि from the living standard point of view, the economy is not growing by 1800, but it is growing up by 2000. Similarly, if the case was
2011 के अंदर prices went up 110 and quantity went up 15, 10 से 15. So when I multiply this, when I multiply 110 by 15, my nominal GDP is 1650. 1000 से 1650. Now remember, इसमें 10% inflationary impact भी है और 50% आउटपुट में ग्रोथ भी है. बोथ ऑफ देम इज मेकिंग इट गो अप. मैं चाहता हूँ इन्फ्लेशनरी इफेक्ट ख़त्म करो और ये बताओ कि रियल कितना इंक्रीज आ रहा है. So in terms of real GDP, if I have to calculate, I'll take this year's quantity and I'll take base year's price, and real GDP is showing कि 1500 से improvement आ रही है. So real is telling me that our GDP is going from 1000 to 1500. Nominal is telling us it's going from 1000 to 1650. Nominal obviously ज़्यादा दिखा रही है because inflation is there. Real कम दिखा रही है because you've adjusted for inflation by taking the base year's prices. So this was scenario number 1, scenario number 2, scenario number 3 to make a contrast as to real और nominal में किस तरह से price change और quantity change से effects different होते हैं. There is another way of looking at it. ये तो मैंने तुम्हें constant prices और current prices के through ये example दिखाया है. There is another way to do it, and this formula can be useful. Suppose दिया हुआ है 2010 में country की GDP is $200 billion, and in 2011 it goes up to say 205 billion US dollars. Okay, and during this time the price index यानी inflation was say 5%. इतनी महंगाई आई है. What they've given you here is GDP going from 200 to 205 billion. ये तुम्हारी nominal GDP है. ठीक है. तो if I was to calculate the real GDP of 2011, I want to calculate real GDP of 2011. So there is a formula to it. Formula is you take your nominal GDP of year 2011, जिसमें inflation included है, and you multiply it with something called an implicit deflator. Implicit deflator क्या है? Implicit deflator एक तरीका है to change nominal to real. ये implicit deflator है. Let me tell you what it is. You take the base year index तो formula for implicit deflator is you take the base year index which is 100 and you divide it by the current year का index. Current year index is basically, इस साल 5% अगर इन्फ्लेशन आई है और बेस ईयर का इंडेक्स 100 होता है तो 100 पे 5% इन्फ्लेशन कर दो तो वो 105 हो जाएगा. So to solve it, to calculate the real GDP, we will take the nominal GDP which is 205. You will multiply it with the base year का इंडेक्स जो हमेशा 100 होता है, और इस साल क्योंकि 5% इन्फ्लेशन आई है तो बेस ईयर का इंडेक्स इज 100 प्लस 5% कर दोगे तो 105 करंट ईयर का इंडेक्स आ जाता है. सो देन यू सॉल्व फॉर इट and when you do you get a real value of 195.2 billion US dollars worth of real GDP. What it means is nominal GDP 200 से 205 गया था.
For a non-economist, yeah, non-eco student, that's economy progressing, doing better. GDP has seen a growth of 2.5%, but at least it has grown. Lekin, when you look at the real by adjusting inflation, it is showing that the GDP has gone from 200 to 195.2. So, in our scenario over here, our nominal GDP goes up from 200 billion to 205 billion, showing that economy has progressed. But remember, this increase has 5% inflationary effect built into it. But if we look at the real GDP ka figure, the real GDP figure is actually going down when you adjust for inflation. That first your GDP was 200 billion in the base year, and now it is going down to 195 billion, suggesting that people are able to buy less goods and services, and that's bad.